Namaskar, I am Dr. Suchitra Mishra. In today's time, when we are finding a surge in the number of COVID cases, we all need to think what we should do and what not. The first and foremost, we should all ensure that we are able to gear ourselves to coordinate and get the vaccine. Vaccination is important because it reduces the severity of the infection. Never has it ever been mentioned that vaccine will guarantee you completely free from infection. Remember the keywords: take the jab and have the cap. When we talk about cap, this is actually your COVID appropriate behavior. And by this, we mean staying and maintaining a distance of 6 feet among us, keeping up with the masks. Currently following the CDC protocol, we now have the double masking where one can wear a disposable mask inside and that can be covered up with a cloth mask. If one is wearing an N95 mask, it is not essential, it is not at all required to put up another mask over it. Along with it, we all need to ensure that we are not going to any of the gatherings, no parties, no rallies, and for the all sake, ensure that we are not in a public group together. Gathering of any sort is going to be detrimental if we are not careful enough. Unfortunately, none of us could remember the lessons of the history that had been given to us. The last Spanish flu pandemic had already shown that the second wave was much deadlier than the first wave. Even though we all are internet hooked and glued, but still then we did not learn the lesson enough, and after the first wave was showing us a decreasing number of cases, we started to party and gathering started. Unfortunately, these all led to rise in the cases, and now what we are seeing, we might be seeing further surge in the cases. So dear people, please gather up your courage, please strengthen your perseverance, and remember that you have to ensure yourself to get the vaccine and follow those behavior appropriately. 6 फीट की दूरता, मास्क पहनना, हैंड हाइजीन फॉलो करना, ये आपको इन्फेक्शन से बचाएगा. आपको वैक्सीन लेना भी है और वैक्सीन लेने के बाद अपने आप को इन्फेक्शन से बचाना भी है. Immunity will not develop as soon as you take the vaccines. Unfortunately, लोगों का ये एक माइंडसेट हो गया है कि मैंने तो वैक्सीन ले लिया है, कोविड मेरा कुछ नहीं कर पाएगा. नो, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. वैक्सीन आपको बचाता है सीवियर डिजीज होने से, इन्फेक्शन होने से नहीं. सो डियर पीपल, प्लीज स्टॉप गैदरिंग एट ईच एंड एवरी प्लेस वेर एवर यू लाइक एंड वेन एवर यू लाइक, एंड टेक योर वैक्सीन शॉट. Stay at home, stay safe. We are unfortunately running out of resources, और आप अगर अभी बिल्कुल भी लापरवाह हुए तो ये सबकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ होगा. So please and please, it's a humble request. Stay at home, stay safe. बाहर जाते हैं डबल मास्क पहनिए. डिस्पोजेबल मास्क के ऊपर क्लॉथ का मास्क है, जो कि डिस्पोजेबल मास्क आप डिस्पोज करेंगे और क्लॉथ मास्क को वॉश करके सुखाएंगे. कोई भी अपना मास्क किसी और के मास्क के साथ शेयर नहीं करेगा, एक्सचेंज नहीं करेगा. अगर आप ये गलती करते हैं तो ये गलती आपके ऊपर भारी पड़ सकती है और किसी का इन्फेक्शन आपको ये इस तरह से इन्फेक्शन दे सकता है. सो आई रिक्वेस्ट यू वन एंड ऑल, प्लीज प्लीज बी सेफ एंड यस, टेक द वैक्सीन. अपने आप इम्यूनिटी बढ़ाने में भी ये हेल्प करेगा. कभी आपको अगर भूले गलती से भी अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो ये आपकी सिवियरिटी को कम करेगा इन्फेक्शन से. बट प्लीज एंड प्लीज टेक द वैक्सीन, टेक द जैब एंड फॉलो द कैप, the COVID appropriate behavior, where we say
put on your masks, follow the hand hygiene, maintain the 6 feet social distancing, and do not touch your mouth, eyes and nose. That's all.